So we have seen our chapter known as a suspensions. From industrial pharmacy, we have seen the pre-formulation tablet, capsule, microencapsulation, suspension, suppository, aerosols. Right. So we are dealing with the biphasic liquid dosage forms, and amongst those biphasic liquid dosage forms, we have seen the suspensions. So today we are going to finish this emulsion also. We have seen the suspensions. Right. Today we will see emulsion. Whatever important part is there. So first of all, what do you mean by emulsion? So as I told you, we are discussing the biphasic liquid dosage forms. Biphasic means two phase, and you can say take an example of solution. Solution means what? Solid is completely dissolved in the vehicle. That is known as a one phase system. Now, one phase system is known as solution, but some solids are not dissolved in the solvent, or two liquids they are not miscible to each other. So in that case, two phase exist. So if dispersed phase means what? Dispersed. Suppose that insoluble solid particles they are dispersed in the one medium known as a suspension. Suspension means there is a dispersed particle which is insoluble. They are suspended in the particular medium. And emulsion means what? Emulsion means what? So it is a two immiscible liquids. Two immiscible liquids they are dispersed. Okay. So two immiscible liquids they are keep in intimate contact with each other in the emulsion. So emulsion is also again one of the biphasic dosage form, and in which two immiscible components, say for example oil and water, two immiscible components they are formulated by using a emulsifying agent which will disperse one phase into another phase. Say for example oil and water. So you can disperse oil as a oil globules in the water. You can disperse by just simply mixing the oil and water and shaking it. After a few seconds, so oil can be separated and water can be separated. Now why? Because your oil globules they will attract each other and they will form a separate oil phase because they are immiscible. There is a less interaction between oil and water. That's why. Now what you have to do, you have to disperse oil droplet into water, and you have to stabilize that droplet for a longer period of time so that that will be withstand with the shelf life of that particular product. है ना? अगर आपने विटामिन ई और वाटर इसका इमल्शन बनाया तो विटामिन ई क्या है? ऑयल सोल्यूबल है. आपने डिस्पर्स कर दिया इमीडिएटली वाटर में. ओके, तो मिक्स कर दिया, उसको शेक कर दिया, मिक्स कर दिया स्टार्टर से या फिर एजिटेटर से. So no doubt there will be dispersion of globules of vitamin E in the water. After standing, so these globules will attract each other and they will coalescence, and there is a formation of one oily layer and one aqueous layer. So that is nothing but the separation of two phase. Now what is the aim of formulator? If anybody wants to formulate the emulsion, pharmaceutics deals with the stabilization of that. Okay, so this chapter deals with the stabilization of globules, stabilization of droplets of liquid in the another liquid. So emulsion is nothing but the biphasic dosage form in which two immiscible components are there which are formulated by emulsifying agent which disperses the one phase into another phase, and the agent decreases the surface tension. Now if you want to keep that emulsion for longer period, अगर आपने oil water ले लिया, emulsion बना लिया, shake कर लिया, तो immediately emulsion बन जाता है, no doubt. But soon after few seconds, that emulsion will break down. So say there will be separation of aqueous phase and oily phase. आपने emulsion बन गया, छोड़ दिया उसको तो फटाक से separation हो जाएगा. क्यों? Because वो globules attract करते हैं each other को, और वो coalesce होते हैं, aggregate होते हैं, और वो एक single phase बन जाता है. Right? So to stabilize that, you are adding third substance known as a surface activation. Now surfactant, or that is in this case known as emulsifying agent. So emulsifying agent you are adding to stabilize the globules, to stabilize the dispersed droplet of one liquid. How? So that is that emulsifying agent will go at a water oil interface, and it will decrease the surface tension.
First of all, it will decrease the surface tension, and then surfactant will form a monolayer around the globules of oil. Now that monolayer formation, because surfactant are nothing but the molecule having lipophilic group as well as hydrophilic group. जो lipophilic group है water के लिए, hydrophilic group oil के लिए, right? So these emulsifier they brings two things together, that is oil and water. Okay, they stabilize the droplets. They will decrease the interfacial tension. They will decrease the surface free energy. They will form a monolayer over the droplet of globule, and they will reduce the charges so that globules can be stabilized. Okay, so emulsion is a kind of dosage form. Okay, it is a biphasic dosage form. Now disperse a system containing two immiscible liquids which is distributed through each other in a minor globule. The system is stabilized by presence of emulsifying agent, and it is nothing but the emulsion. Now the component of phase, okay, in this case as you have two component, emulsion में दो component होता है oil and water, तो उसमें का एक जो है वो कम मात्रा में होता है. So one phase is relatively less in amount and one phase is larger than another phase. The component which is present in a higher amount, the component or the phase which is present in the higher amount, which is insoluble in the component which is dispersed, is known as a continuous phase. Now जो suppose oil and water emulsion, तो oil क्या है, dispersed phase है. Oil globules are dispersed in the water. So oil is a dispersed phase, or it is also known as a internal phase, or also oil is a dispersed phase, also known as a internal phase, also known as a discontinuous phase. Discontinuous phase. And water is nothing but the it is known as a dispersion medium or continuous phase or external phase. So in case of oil water emulsion, oil is a dispersed phase or internal phase or discontinuous phase. Water is a continuous phase or it is known as a external phase or it is known as a continuous phase. You know? So the component which is in a relatively smaller in amount, known as a dispersed phase. The component which is in a higher in amount, known as a dispersion medium. Say for example water and oil emulsion. तो आपको इमल्शन में कंटिन्यूस फेज किसको बोलते हैं, इंटरनल फेज किसको बोलते हैं, या फिर डिस्पर्स फेज किसको बोलते हैं. ऑयल एंड वाटर, OW इमल्शन. OW इमल्शन है आपका, है ना, O by W. OW इमल्शन है तो ऑयल इज अ इंटरनल फेज और डिस्पर्स फेज और इट इज नथिंग बट द discontinuous phase. So water is nothing but the water is known as a continuous phase or known as a external phase or continuous phase, continuous phase or external phase or known as a तो internal phase water is also known as a external phase. ऑयल को बोलेंगे इंटरनल फेज, वाटर को बोलेंगे एक्सटर्नल. तो ऑयल को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फेज, वाटर को बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज. ठीक है, लाइक दिस. Oil in water emulsion, which is in which oil is dispersed in water. Water in oil emulsion is also good. OW emulsion, WO emulsion. OW में क्या होता है, oil in water, oil is dispersed phase in a continuous phase water. Whereas water in oil means here water is dispersed in the oil. So now emulsion is thermodynamically unstable system. Emulsion is a thermodynamically unstable system. How I will explain in upcoming slides. So thermodynamically unstable mixture of two immiscible liquids in which there is an intimate mixture of two immiscible liquids that exhibit acceptable shelf life at room temperature. So technical definition of emulsion. Technically आप emulsion को कैसे define कर सकते हो? Technical definition of emulsion: it is a thermodynamically unstable mixture of two immiscible liquids, or it is nothing but the intimate mixture of two immiscible liquid that shows acceptable shelf life at a room temperature. So this is the technical definition of emulsion. Now when oil and water they are mixed mechanically, अगर आपने oil और water को mix किया, so both phases initially will form a droplet. Now if during the agitation oil will be dispersed into water because of the mechanical agitation or mechanical stirring. But when you stop this agitation or stirring, the droplet of oil will quickly coalesce. Okay?
is they will come together, they will attract each other and they will form a whole oil, separate oil. So two liquid will be separated again. The lifespan of droplet can be increased. Now, what is your main aim? Main aim of a formulator is nothing but to increase the lifespan of these droplets by using emulsifier. So emulsifier or surfactant is added to increase the droplet shape lifespan. The droplet will be when the droplet will be from one phase. Droplet will be from one phase. Droplet क्या होता है? One phase का होता है. They are known as dispersed phase or discontinuous phase, and it will occupy only 74 of total emulsion. And now it will be surrounded by external phase or continuous phase. So this is just the introduction part of your emulsion. I hope I am audible to you. Audible आएगा? So oil droplets, they are dispersed as a continuous in an aqueous phase. Oil droplets, they are dispersed in a continuous phase which is aqueous. So oil droplet are dispersed in the aqueous phase known as a OW emulsion. इसको अपन बोलेंगे O by W. इसको दो अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, OW emulsion या फिर O by W emulsion, और एक अलग अलग ये होता है. If oil is a continuous phase and water is dispersed phase, then it is known as a, अगर oil क्या है, continuous phase है और water dispersed है तो O by W. Now global size normally in a range of 0.25 to 10 micron. Dispersed particles होते हैं यहाँ पे, global होते हैं, dispersion है. Okay? Dispersed global size will have in a range of 25 to 10 micron, 0.25 to 10 micron. When change in OW emulsion to WO emulsion, आपके पास क्या है? Oil in water, आपके पास है OW emulsion. Now ये OW emulsion change होता है due to temperature or due to microbial contamination or due to another reason. So this OW emulsion will be changed in a WO emulsion automatically. Now this is the phenomenon known as a phase inversion. Change in the OW emulsion to WO emulsion or change in the WO emulsion to OW emulsion known as a phase inversion. Phase inversion important question आ सकता है. Multiple emulsion will also be available, है ना. ये तो बोलते हैं उसको single emulsion. Now multiple emulsion like oil in water, you know, oil in water in oil, this is known as a multiple emulsion. Oil in water in oil, or water in oil in water. So again this is known as a multiple emulsion. Now phase inversion also occurs in the multiple emulsion. Okay? थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको इम्पोर्टेंट है. फेज इन्वर्जन विल ऑकर इन मल्टीपल इमल्शन आल्सो. ऐसा नहीं कि सिंगल इमल्शन जो है, सिंगल टू फेज इमल्शन, उसमें ही ये फेज इन्वर्जन होता है, ऐसा नहीं. फेज इन्वर्जन कैन ऑकर इन मल्टीपल इमल्शन. नाउ इफ O by W by O, oil in water in oil, ऐसे इमल्शन है. सो हियर so emulsion will be converted into after phase inversion. If there is a phase inversion of O by W by O emulsion, oil in water will be the resultant phase inversion product. In this case OW by W, water in oil ऐसा emulsion है, so that will be converted after inversion, phase inversion, you know. So it will be O by W. Okay? It will be W. Okay, sorry, यहाँ पे W by O हो जाएगा, W by O. So if oil in water in oil ऐसा multiple emulsion है, so उसका भी फेज इन्वर्जन होता है. फेज इन्वर्जन के बाद में वाटर इन ऑयल बनेगा आपका, है ना. वाटर इन ऑयल इन वाटर ऐसा अगर इमल्शन है, मल्टीपल इमल्शन, उसका फेज इन्वर्जन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको? उस बाद में आपको मिलेगा ऑयल इन वाटर. सो फेज इन्वर्जन इज नथिंग बट द चेंज इन द टाइप ऑफ इमल्शन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. व्हाट इज फेज इन्वर्जन? चेंज इन द टाइप ऑफ इमल्शन. सो OW emulsion will be converted to WO emulsion, or multiple emulsion also will be converted to phase inversion product, so known as a phase inversion, right? So multiple emulsion can also be converted into phase inversion. So multiple emulsion like oil in water in oil, okay? Or water in oil, or water in oil, or water in oil in water. So multiple emulsion will also get inverted. For example, water in oil
in water will be converted to OW emulsion. Applications of emulsion or advantages of emulsion. Emulsion में भी आप 3 टाइप, emulsion कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. एक तो होता है आपका oral emulsion, orally used. दूसरा होता है topically used and तीसरा होता है parenteral emulsion. Parenteral emulsion का characteristic क्या होना चाहिए? It should be sterile, it should be sterile, it should be paraben free, and it should have particular globule size so that it can easily pass through needle also, and it can easily pass through a vein also. Otherwise orally तो कोई दिक्कत नहीं. Topical emulsion का क्या है? It should have dermatological clearance. It should not have dermatological toxicity. It should have dermatological acceptance. Now, what are the main advantages of emulsion? So, not for your semester exam, but for GPAT point of view. That's why I have listed over here. So, patient acceptability is there. Then increasing the palatability. Palatability means what? Suppose if you have bad taste, अगर आपको laxative use करना है and if you are using a mineral oil, so that has a very bad taste. So convert that oil into emulsion and that will mask the taste. So to increase the palatability, for example, mineral oil laxative or oil soluble vitamins or lipid soluble vitamins, then lipid nutritive preparation, they are converted as a OW emulsion and to increase their palatability. तो जब मिनरल ऑयल अपन आप डायरेक्टली लेंगे तो आपको पैलेटेबल नहीं है ना, उसका स्मेल, उसका टेस्ट that will be very bad. So you can convert that liquid, that oil into emulsion, OW emulsion. Now that is a palatable. So to increase the palatability, to increase the taste masking, example is mineral oil based laxative or oil vitamins, lipid soluble or lipid nutritive preparations. Then again, emulsion will also increase the efficacy of certain drugs. So insulin, heparin, they are not well absorbed. Insulin, heparin, they are not absorbed well. But if you convert insulin, heparin into emulsion, so they are absorbed well, and efficacy is increased for oral emulsion. It is a major another advantage. Another advantage, emulsion will look like elegant. So emulsion has elegance and easily it can be washed when applied topically. Topical emulsion में क्या है, दिखने में अच्छा रहता है and you can easily wash out. OW emulsions, they are mostly used. Now radio opaque emulsions are available for diagnostic purpose. So X-ray examination के लिए होता है. OW emulsion based upon OW, or they are most commonly used emulsion for topical purpose. WO emulsions, they are used to disperse water soluble antigen into mineral oil. जो वाटर soluble antigen होता है उसको mineral oil में disperse करने के लिए OW emulsion बना गई. That is used for intramuscular injection as a vaccine. Again, emulsion is also cost effective. आप बोलेंगे सर cost effective कैसे? जो oil soluble vehicles होते हैं, lipid vehicles, so they are costly, and by emulsification you can decrease the quantity of lipids by 50%. So obviously, because oil soluble vehicles are expensive and cost can be decreased by use of water. Now theory of this emulsion. When oil is mixed with water, different globule sizes, different size globules of different size are produced. Now interfacial tension exists between two immiscible liquid. जब आप ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करते हो, डिफरेंट साइज ग्लोबुल के डिफरेंट साइज के ग्लोबुल्स बनते हैं ऑयल के इन वाटर, है ना, and there is an interfacial tension between water and greater will be the immiscibility between these two liquids, greater will be the interfacial tension. जितना ज्यादा immiscibility होगा उतना ज्यादा क्या होगा, interfacial tension ज्यादा होगा. Say for example, you can example है मिनरल ऑयल अगर वाटर में डालेंगे तो उसका इंटरफेशियल टेंशन होता है 59%. एडिबल ऑयल जो है ओलिव ऑयल अगर वाटर में डालेंगे तो उसका surface tension होता है 23 more will be the immiscibility, more will be the surface tension. Basic aim of formulator is nothing but to stabilize that droplet. To produce a stable emulsion, dispersion of oil in the water requires a large interfacial area.
Production of emulsion will require amount of work which is equal to the product of interfacial tension and change in the area. So interfacial tension is nothing but the free energy, surface energy, free interfacial energy होता है. Now if you want to stabilize the emulsion, you have to do work. You have to apply particular. You have to uh, you have to do some work over there. You have to apply some energy in the form of either emulsion agent or all that. Now, for production of stable emulsion, you will require amount of work. Now, that amount of work is equal to the product of interfacial tension and change in the area. So, work done is nothing but the is equal to interfacial tension into change in the interfacial area. Thermodynamically, this work is nothing but the free energy which is imparted to a system. ये जो work done होता है, it is nothing but the free energy which is imparted into the system. A high free energy, अगर system में a high interfacial free energy is favored by reduced interfacial area. जितना एरिया कम होगा तो उतना उसका एनर्जी जाता होगा. And high interfacial free energy favored by reduced interfacial area by causing a droplet spherical shape. Spherical shape क्यों होता है? Because spherical shape is having minimum surface area to the volume and causing coalescence. Coalescence means aggregation of these droplets. Coalescence means decrease in the number of droplet. Initially आपने मान लीजिए कि डिस्पर्स किया तो कुछ थाउजेंड्स ड्रॉपलेट बने ऑयल के, बाद में वो 1000 के 10 ही ड्रॉपलेट बने, मतलब पूरा सेपरेशन ही हुआ है, राइट. सो नोन एज अ कोएलेसेंस, राइट. सो व्हाट these things, what do you mean by this theory? To produce a stable suspension, to produce a stable emulsion, dispersion of oil into water requires a large surface area, and the production of stable emulsion require amount of work. You have to do, you have to apply something, you have to apply some force, you have to apply some energy. Now that work is equal to the product of interfacial tension and change in the interfacial area. Thermodynamically, it is the work is known as a free energy which is imparted into system to stabilize the system. Now a high interfacial free energy favored by reduced interfacial area. जितना इंटरफेशियल एरिया कम करेंगे उतना हाई एनर्जी यहाँ पे आ रहेगा. सो हाई एनर्जी फेवर्ड बाय reduced interfacial area by causing a droplet to take a spherical shape. That is a minimum surface area to the volume, and then causing coalescence. Now surface active agent, surface active agent मतलब क्या? These are the chemicals which are having both characters. Hydrophilic characters means water loving character, lipophilic characters means oil loving character, right? So these are the molecule known as amphiphils because they have both character of oil as well as. So surface active agent, then hydrophilic colloids, surface active agent, then hydrophilic colloids, finely divided solids. So these are three surfactants, hydrophilic colloid and finely divided solids. Now they are added to stabilize the droplet. What they will do? They will decrease the interfacial tension. They will decrease the interfacial tension. And act as a barrier to a droplet. To coalescence. वो क्या होता है उसमें? एक तो वो सरफेस टेंशन कम कर देगा बिटवीन टू लिक्विड, और वहां पे जो ड्रॉपलेट बना है तो उसके ऊपर एक थिन फिल्म बनाएगा एंड एक्ट एज अ बैरियर टू कोएलेसेंस द लिक्विड. तो जब बैरियर बनता है तो कोएलेसेंस नहीं होगा, एक में के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा ग्लोब्यूल्स का, देयर विल बी नो क्रैकिंग ऑफ bonds. Okay. Now these surface active agents, surfactants or hydrophilic colloids or finely divided solids, they get adsorbed at an interface and more precisely on the surface of suspended droplet. And they were okay. Now these surfactants or colloids or these divided solids, finely divided solids, they stabilize the emulsion by three way. वो तीन तरीके से stabilize करते हैं. First, by decreasing the interfacial tension. First, they will decrease the interfacial tension. Thermodynamic
stabilization they are doing. So they decreases the interfacial tension. They stabilize the system thermodynamically by decreasing the interfacial tension. Also decreases the attractive process of dispersed copy and lowers the interfacial free energy, which prevent the coalescence. Now these surfactant hydrophilic collide or finely divided solids, how they will stabilize the emulsion? तो emulsion को stabilize कैसे करते हैं? जो oil का droplet है वो droplet वैसे ही होना चाहिए, वाटर में डिस्पर्स होना चाहिए. वो ड्रॉपलेट अगर एक में के साथ में आ गए तो वो कोएलेसेंस हो जाएगा और इमल्शन पे आउट हो जाएगा, राइट. तो आपका एज अ फॉर्मुलेटर आपका काम क्या है कि ये जो ग्लोबिल्स है वो एक में के साथ में चिपकने नहीं चाहिए, ये सेपरेट ही रहने चाहिए. सेपरेट रहने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले यू हैव टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन और यू हैव टू cover the droplet using a thin film, right? You have to decrease the surface free energy. How all these things who are doing emulsifying agent, or they are classified into either surfactant or hydrophilic collide or finely divided solids. तो ये करते हैं. They will decrease the interfacial tension. Now they will form a film, interfacial film formation. Surfactant or emulsifying agents, they act by three ways. First, they will decrease the interfacial tension. Second, interfacial film formation. So they will create a mechanical barrier and prevent the coalescence. Emulsifier will form a coherent monomolecular or multimolecular film on a droplet, which will prevent the globules to coalesce with each other. ना मतलब क्या, ये जो सरफेक्टेंट होते हैं वो क्या करेंगे, एक जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर एक मोनोलेयर फॉर्म करेंगे ना, मोनोलेयर फॉर्म करेंगे एंड दैट विल एक्ट एज अ बैरियर कोएलिसेंस ना, एक में को अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे. एंड आल्सो दे विल कॉज द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन. सो जैसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है, आपने वी हैव सीन इन द दिस कोलाइड चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. सो लाइकवाइज दैट जो ग्लोबुल्स होता है वहाँ पे वो पॉजिटिव आयंस जो एनायनिक कैटायनिक सरफेक्टेंट होते हैं, पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद में नेगेटिव आयन डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. So electrical double layer approach or electrical barrier approach. So there is a formation of monomolecular film of surfactant in the emulsion. That depends on the formation of monomolecular film or formation of type of film depends on the nature of surfactant, concentration of surfactant or combination of surfactant. Different types of films are formed. Gaseous film बनता है, condensed film बनता है, expanded film, interfacial complex condensed film, lamellar liquid crystalline film, hydrophilic collide multimolecular, finely divided solids will form a solid particle film and electrical double layer formation. So if you want to read in the detail you can read from book, उसमें बहुत सारे information दिया है but उतना यूज नहीं. This is the theoretical part of your emulsion. You can expect one or two question from emulsion. Now type of emulsion type कितने होते हैं? जैसे मैंने बोला OW emulsion होता है, WY emulsion, WYO emulsion होता है और multiple emulsion होता है. So type of emulsion. So surfactant, if surfactant or if emulsifying agent is a water soluble. अगर surfactant जो है आपका surface active agent जो है आपका water soluble है, for example like potassium soaps, then polyoxyethylene alkyl ether which is having IU plus ethylene oxide units. Now अगर oil water soluble surfactant है that will favor a OW emulsion है ना. Okay, water soluble surfactant है so that will make a OW emulsion, that will make a OW emulsion. Now if lipid soluble surfactant is there, so for example calcium soap, polyethylene polyoxyethylene alkyl ether having less than 5 ethylene oxide unit, so it will favor a OW, it will favor a WO emulsion है ना. अगर वाटर सोल्यूबल सरफेक्टेंट है तो वो OW emulsion बनेगा, ऑयल इन वाटर emulsion बनेगा. अगर ऑयल सोल्यूबल सरफेक्टेंट है आपका that will favor a formation of WO emulsion, right? Type of emulsion. Next, the polar portion of emulsifying agent. Emulsifying agent मतलब क्या है? सरफेक्टेंट. उसमें क्या होता है? पोलर पोर्शन होता है, नॉन पोलर पोर्शन होता है. Now the polar portion of emulsifying agent, polar portion
Okay, polar region or polar chain in the emulsifying agent will offer a good barrier for coalescence and relatively high volume of internal phase can be incorporated into O by W emulsion, है ना. जो पोलर पोर्शन होता है, जो इमल्शन कैसे दिखता है, सॉरी सरफेक्टेंट कैसे होता है. So there is one polar and one is a non-polar. So this is a polar head, this is a non-polar tail. The polar portion of emulsifying agent is a good barrier for coalescence globules, and that's why a relatively large amount of internal phase can be incorporated into oil in emulsion, OW emulsion. Now OW emulsion में near about 70% oil भी डाल सकते हो, 30%. So large amount of internal phase that can be incorporated into O by W emulsion. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. But in case of W by O emulsion उतना बैरियर इफेक्टिव नहीं होता. ऑयल सोल्यूबल जो सर्फेक्टेंट होते हैं, ओके, so hydrocarbon chain will act as a poor barrier, and that's why in the W by O emulsion, so only water can be incorporated is a 40%. याद रखना. नेक्स्ट इज नथिंग बट there is a one rule known as a Bancroft rule. तो आपको ये पूछ सकते हैं Bancroft rule, किसी ने बोला नहीं होगा आपको. So water soluble emulsifiers will give you water soluble emulsifiers or water soluble surfactant will give you, okay, O by W emulsion, and lipid soluble surfactant will give you, or lipid soluble emulsifier will give you W by O emulsion, and that is known as a Bancroft rule. तो क्वेश्चन आएगा Bancroft rule is related with, so it is related with the emulsion or surfactants. Bancroft rule. Now phase inversion temperature. Phase inversion temperature. It is a maximum, okay, it is the temperature at which maximum particle size reduction will occur. Particle size reduction मतलब globule size reduction, not particle. Maximum particle size or maximum globule size reduction occur at a phase inversion temperature. Water soluble surfactant in this temperature will become a lipid soluble surfactant. यहाँ पे water soluble surfactant जो है ना वो lipid soluble बन जाएगा, या फिर है ना, या फिर lipid soluble है तो वो water soluble बन जाएगा at this temperature, and that's why this temperature is known as a phase inversion temperature. What is phase inversion? Change in the type of emulsion. OW emulsion, OW emulsion बन जाएगा WO emulsion, WO emulsion है तो वो बन जाएगा OW emulsion. That is known as a phase inversion, and the temperature at which there is a phase inversion known as a phase inversion temperature. Surfactant की कितने टाइप होते हैं? Surfactants they are classified into three types. Surfactants they are classified into three types. जैसे for example anionic, है ना. Anionic मतलब क्या? These surfactant will have negatively charged. These surfactant will have negative charge. This is COO minus group. COO minus group. That is a anionic. Cationic means positively charged. Okay? So anionic surfactant they have carboxylate group. Anionic surfactant they will have carboxylate group. For example, soap, you know, sulfonate, then sulfate ions, alkali benzene sulfonate, detergents, salt of fatty acid, lauryl sulfate, okay, that is foaming agent, dialkyl sulfosuccinate, wetting agent, you know, lignosulfonate, dispersants. So they are the dispersants, they are the anionic surfactants. Cationic surfactant कौन से होते हैं? इसके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा. So long chain cationic amine, quaternary ammonium salt जैसे cetrimide वगैरह होता है, benzalkonium chloride, mostly they are commonly used as an antimicrobial preservative. Phospholipids are also there, betaines also there, sulforaphane also. Non-ionic surfactant. Non-ionic surfactant means also known as amphoteric surfactant. इसमें carboxylate, phosphate as anion, quaternary group as a cation. इसमें दोनों होते हैं amphoteric. This is twins and spans. Now identification of emulsion. There are different type of emulsion. How you can identify them? So identification of emulsion. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको. Identification of emulsion. Identification test for emulsion. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. Different tests are there for identification. So you can see over here. Identification test for emulsion type. कि emulsion का कौन सा टाइप है आपको कैसे समझ में आएगा? ये O by W emulsion है या W by emulsion है? So there are few tests you can also perform in your lab. So first test is nothing but the dilution test. So dilution test, dilution करना है आपको. कैसे dilution करना है? You have to dilute the suspension with the continuous phase. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम नहीं कि emulsion कौन सा है, वो है ना, आपको वाटर लेना है, उसमें ऐड करना है. अगर वाटर
बहुत सारा वाटर ऐड करने के बाद भी इमल्शन स्टेबल है तो उसका मतलब वो O बाय W इमल्शन। ओके, अगर वाटर ऐड करने के बाद वो इमल्शन ब्रेक होता है तो वो W बाय इमल्शन है। Dilution test, you have to dilute your emulsion with this continuous phase. Now if dilution with the aqueous phase, if emulsion is stable, if you add water and if it is stable, upon unlimited dilution with the water, upon unlimited addition of water, so still emulsion is stable, so that means it is a O by W emulsion, oil in water emulsion, stable with the अनलिमिटेड डाइल्यूशन विद ऑयल। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो यहाँ पे ऑयल क्या है, कंटिन्यूस फेज है, तो ऑयल से अगर डाइल्यूट कर रहे हो आप और वो ब्रेक नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या है, इट इज ओडब्ल्यू इमल्शन। सेकंड टेस्ट होता है डाई टेस्ट, मतलब क्या है कि ऑयल ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी स्टेबल इफ यू डाइल्यूट it with the water. So upon dilution with the water, OW emulsion will be stable for unlimited dilution. But upon dilution with the oil, W by emulsion, W by O emulsion will be stable, है ना, क्योंकि इसमें ऑयल कंटिन्यूस फेज है, इसमें क्या है, वाटर कंटिन्यूस फेज है। इसको वाटर कितना भी ऐड किया तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। इसको ऑयल कितना भी ऐड किया तो क्या रहेगा, स्टेबल है। सेकंड टेस्ट होता है डाई स्टेट, डाई टेस्ट। सो यू हैव टू यूज डाई because dyes they are oil soluble। डाइस क्या होते हैं, ऑयल सोल्यूबल होते हैं। कौन सा डाई यूज करना है आपको, यहाँ पे याद रखना है स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड डाई यूज करना है। दिस डाई इज ऑयल सोल्यूबल, ये ऑयल में जाएगा अगर, ओके, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप इफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स विल अपीयर एज अ रेड एंड ग्राउंड विल अपीयर एज कलरलेस, बिकॉज ये क्या है, ऑयल सोल्यूबल डाई है, ये ऑयल के ड्रॉपलेट में जाएगा, वाटर में नहीं जाएगा। सो droplet of oil or globules of oil will appear as red, ground will be colorless। now okay, dispersed, okay, यहाँ पे क्या है, oil continuous phase है लेकिन water क्या है, dispersed phase है। so dispersed globules of water will be colorless over here and ground will be। तीसरा होता है conductivity test, third is a conductivity test, conductivity test। now conductivity test कब होगा, when there is a salt in the emulsion, when there is a salt in the emulsion or when there is a water in the emulsion. You know water is a good conductor of electricity. So you have to dip two electrodes and you have to attach that with the, you have to form a circuit and you have to attach with the bulb. Small neon lamp, small neon lamp with the circuit fitting with the two metal electrode. You have to dip in the emulsion. Now if lamp will grow, you have to pass the current. If lamp will grow, because water will be the continuous phase, वाटर ज्यादा मात्रा में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो वाटर ज्यादा मात्रा में है मतलब वाटर क्या है, कंटिन्यूस फेज है। सो इट इज OW emulsion, वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ लैम्प is not glowing, that means oil is a continuous phase and it is a OW emulsion, because it is a WO emulsion because oil is not a conductor of electricity। this fourth test होता है fluorescence test। oil will show fluorescence under UV light, due to does not show fluorescence under UV light because यहाँ पे ऑयल ग्लोब्यूल्स क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। OW emulsion में क्या है, OW emulsion में ऑयल बहुत कम मात्रा में था, O oil is dispersed as a globules, so it will not show fluorescence। but अगर ऑयल continuous phase है in the WO emulsion, so it will show fluorescence under UV light। तीसरा होता है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। पेपर soaked in the cobalt chloride solution, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में ये पेपर आपको सोक करके भिगो के रखना है एंड आपको इमल्शन में डीप करना है। Now, if paper turns into pink color from blue, so it is a OW emulsion, and with the WO emulsion there is no change। So these are the different identification test for type of emulsion, है ना। वाटर से डाइल्यूट किया आपने, वो स्टेबल है इमल्शन तो उसको बोलेगा अपन OW emulsion। ऑयल से डाइल्यूट किया स्टेबल है तो WO emulsion। डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स अपीयर होता है रेड कलर के ड्यू टू स्कारलेट रेड डाई, वो है OW emulsion। अगर डिस्पर्शन मीडियम अगर रेड है, डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स अगर कलरलेस है तो उसका मतलब होता है वाटर इन ऑयल emulsion। कंडक्टिविटी टेस्ट, सर्किट ज्वाइन करके लैंप अगर ग्लो हो रहा है, लैंप अगर जल रहा है, दैट मीन्स water is there in a large amount, that means continuous phase means OW emulsion।
और लैंप नहीं जला है मतलब वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड ग्लोबुल से, सो ओ डब्ल्यू बाई ओ इमल्शन। तो जो ऑयल होता है वो फ्लोरोसेंस दिखाता है यूवी के अंदर। ऑयल का डिस्पर्स्ड अगर है ऑयल, सो इट विल नॉट शो फ्लोरोसेंस। अगर ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो फ्लोरोसेंस दिखाएगा। दैट्स व्हाई डब्ल्यू बाई ओ इमल्शन विल शो फ्लोरोसेंस, ओ डब्ल्यू इमल्शन विल नॉट शो फ्लोरोसेंस। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट शो करना है, कोबाल्ट क्लोराइड में पेपर आपको, वो पेपर इमल्शन में डालना है। सो ओ डब्ल्यू इमल्शन में क्या होता है, ओ बाई डब्ल्यू इमल्शन में it will turn pink from blue and there is no change in the WA emission. So these are the different tests for identification of emission. You can see over here again same thing, dilution test. Emulsion can be diluted only with the external phase, यहाँ पे याद रखना, only with the continuous phase. Useful only for liquid emulsion. This method is useful only for liquid emulsion. दूसरा होता है dye test. So water soluble solid dye tints only OW emulsion. वाटर सोल्यूबल डाई है तो वो OW emulsion को ही स्टेन करेगा। Emulsions and reverse microscopic observation usually help and may fail ionic emulsifier if they are present. अगर ionic emulsifier है तो ये डाई टेस्ट फेल होता है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर टेस्ट। फिल्टर पेपर impregnated with the cobalt chloride and dried, उसका कलर होता है ब्लू। It will changes into pink when added to a OW emulsion. Now the test fail भी उसका may fail if emulsion is unstable or breaks in the presence of electrolyte. Fluorescence test है आपका, oil or fluorescence under UV, oil will show fluorescence under UV. So OW emulsion will exhibit not fluorescence but WO emulsion will fluorescent throughout. So it is not always applicable test. Next होता है conductive test. So electrical current is conducted by OW emulsion, not by WO emulsion. Fails in ionic OW emulsion. टेस्ट है उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट इज नथिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। सो इमल्सिफाइंग एजेंट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इमल्सिफाइंग एजेंट डज, सो इट विल डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन गिवन टू इमिसिबल लिक्विड, इंटरफेशियल फ्री एनर्जी भी डिक्रीज करता है, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। इमल्सिफाइंग एजेंट में भी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल जो अवेलेबल है, इधर वो वेजिटेबल सोर्स से आ सकते हैं या फिर एनिमल सोर्स से। वेजिटेबल सोर्स से क्या है, गम अकेशिया, गम ट्रैकन, स्टार्च, पेक्टिन, आयरिश मॉस, जिलेटिन है आपका, केराजिनन है। एनिमल सोर्स से क्या आएगा, वूल पैट आएगा, एग येल्क आएगा, जिलेटिन आएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट में भी आइदर सेमी सिंथेटिक जो है वो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स, लाइवली कोलाइड्स, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक सरफेक्टेंट्स हो सकते हैं सिंथेटिक। सो अनायनिक कौन सा है, याद रखना है, सोडियम लाउरिल सल्फेट, क्वेश्चन आ चुका है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनायनिक सरफेक्टेंट, सोडियम लाउरिल सल्फेट। केटानिक सरफेक्टेंट कौन से, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, सेट्रिमाइड, राइट। नॉन आयनिक कौन से, नॉन आयनिक ग्लिसरील एस्टर्स, कार्बोल्स, मैक्रोबॉल्स, ट्विन्स, स्पैंस। पॉलीसॉर्बेट 20 कौन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज पॉलीसॉर्बेट 20? इट इज पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बेटन मोनोलाउरेट, लाउरिक एसिड का डेरिवेटिव। पॉलीसॉर्बेट 60 क्या है, पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बेटन मोनोस्टीयरेट। लाउरेट है मोनोलाउरेट, तो पॉलीसॉर्बेट 20, है ना। मोनोस्टीयरेट है तो पॉलीसॉर्बेट 60, मोनोओलिएट है तो पॉलीसॉर्बेट 80। इजी है देखो, पॉलीसॉर्बेट 20, 60, 80। क्वेश्चन अगर आ गया आपको व्हाट इज पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 60, तो ये सेम ही होता है। इसमें सिर्फ क्या है, फैटी एसिड जो है ना वो अलग है। सो इन द पॉलीसॉर्बेट 20 इट इज नथिंग बट द polyoxyethylene sorbitan monolaurate. In case of polysorbate 60 it is a monostearate, polyoxyethylene sorbitan monostearate. In case of polysorbate it is a monooliate. यहाँ पे लाउरिक एसिड है, यहाँ पे स्टेरिक एसिड है, यहाँ पे ओलिक एसिड है। Now inorganic surfactant, inorganic emulsifying agent, milk of magnesia, magnesium oxide, magnesium trioxide। अल्कोहल्स में कार्बोवैक्स, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, स्टाइल अल्कोहल, स्टीरिल अल्कोहल। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स में क्या आएगा, क्लेज आएंगे, क्लेज, बेंटोनाइट, हेक्ट्राइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अदर्स में आएगा सैपोनिन्स एंड कार्बोमोल्स।
दे आर द क्लासेस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको एक बार, क्लासेस याद रखना है। यू कैन सी ओवर हियर अगेन सेम थिंग कि एनोनिक सरफेक्टेंट। तो जीपैट 23 में क्वेश्चन है सोप्स आर एनोनिक सरफेक्टेंट। सोप्स क्या होता है? एनोनिक सरफेक्टेंट। क्योंकि उसमें क्या है, सोप मतलब क्या है ना, इट इज नथिंग बट द salt of sodium or potassium salt of your fatty acid, that is soap. So soap is an anionic surfactant. Sodium oleate, sodium palmitate, sodium lauryl sulfate, sodium laurate sulfate, sulfate and ether sulfates, benzene sulfone. मी लेक्चर घेतो बघा, किंवा स्टुडंट पाहतील ना मग लेक्चर घेतो मी. Then okay, so surfactant for soaps are anionic surfactants, sulfate esters. Okay, sulfate esters, sodium laurate sulfate, sodium laurate sulfate again, बेंजीन सल्फोनेट, उसमें 4 बेंजीन डिओडेकेन सल्फोनेट सोडियम. ओके, हेमिस्टर्स में सोडियम डिओडेसिल सल्फोनेट. केटोनिक सरफेक्टेंट में आएगा अमाइंस एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स लाइक टेट्राडेसिल मिथाइल अमाइन, बेंज अल्कोनियम क्लोराइड, हेक्साट्राइमिथिलीन अमोनियम क्लोराइड. एनायनिक सरफेक्टेंट ये केटोनिक वाले सेट्रिमाइड हो गए. नॉन आयनिक सरफेक्टेंट उसमें ट्राइडेकेनॉल, डायासैलिथॉक्सीयूरिया वगैरह. तो ये चार्ट आपको इसमें मिल जाएगा, लैब में मिल जाएगा. यू कैन ओवर दैट. ये क्या है? टीओ मतलब टॉपिकल है. टीओ मतलब टॉपिकल. यू कैन सी एचएलपी वैल्यूज. सॉरी, यहाँ पे टाइप है एंड टाइप एग्जांपल एंड यूटिलिटी. सो ये क्या है? इट इज नथिंग बट द प्रिजर्वेटिव और एंटी एजेंट. एंटी एजेंट यूज्ड इन द इमल्शन. इमल्शन में आपको एंटी एजेंट भी लगते हैं. तो एंटी एजेंट यूज्ड इन द इमल्शन. तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव वाले कौन से? ये वाले बेंजोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, प्रोपेनिक एसिड एंड सॉल्ट, dihydroacetic acid and its salt. So they are antifungal. Alcohol को से chlorobutanol, phenoxy to ethanol. They are they are used in the eye preparation. And aldehydes is a formaldehyde, glutaraldehyde. They are synergistic. So formaldehyde group दोनों होते हैं ये वाले. hexamethylene tetramine, mono and dimethylol, you know, then phenol, cresol, whatever. They have broad spectrum antibacterial activity. They are used as an antimicrobial in this emulsion. Emulsion में भी क्या है? contamination हो सकता है. That's why antimicrobial एजेंट भी यूज करना है. quaternary carbon compound like chlorhexidine, benz alkonium chloride, N-acetyl trimethyl ammonium bromide. Mercurial compounds में भी phenyl mercuric nitrate, phenyl mercuric acetate. उनका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. मिसलेनियस में ये आएगा आपका. ये भी आपको बुक में जाके देख लो एक बार. एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता. ये वाले जो प्रिजर्वेटिव्स है वो आपको पैरेंटल में पूछेंगे. सो एचएलपी वैल्यू एक बार रिवाइज करो किसका कितना एचएलपी है. केमिकल डेजिग्नेशन एचएलपी एंड वाटर डिस्पर्सिबिलिटी. तो सबसे पहले है आपका इथिलीन ग्लाइकोल स्टीरेट. इथिलीन ग्लाइकोल स्टीरेट 1.5 होता है. एचएलपी सोडियम ट्राइस्टीरेट 2.1, propylene glycol monostearate 3.2.1, 3.4, sequiolate 7.3.7. So they will not disperse in the water. They are lipid soluble, no dispersion. So glyceryl monostearate, propylene glycol monolaurate, sorbitan monostearate, diethylene glycol monostearate, glyceryl monostearate. So they will have poor dispersion. ये तो डिस्पर्स नहीं होंगे वाटर में, ये poorly disperse होंगे. Sorbitan mono palmitate, sucrose oleate, polyethylene glycol 200 mono, है ना. sorbitan monolaurate ये मिल्क डिस्पर्शन बनाएंगे. इनका एचएलपी वैल्यू इतना सब इसका याद रखने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, बस क्लियर सॉल्यूशन कौन बनाएंगे? क्लियर सॉल्यूशन ये बनाएंगे इसका एचएलपी वैल्यू ज्यादा है. जैसे polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 400, 420 वगैरह. then polyethylene glycol 100, potassium oleate, sodium lauryl sulfate. क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे. ट्रांसलूसेंट डिस्पर्शन कौन बनाएगा? ये बनाएंगे एचएलपी वैल्यूज. बाद में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन द लिस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन द
एंटीऑक्सीडेंट मतलब दे विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, है ना, दे विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन. So BHA, BHT, beta related hydroxyanisole, BHA, BHT मतलब beta related hydroxytoluene. They are used in this concentration. Most of the antioxidants are used in this concentration. 0.0012, 0.1% weight by. तो गैलिक एसिड देखो, गैलिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, एस्कॉर्बिल palmitate, सल्फेट, है ना, एल्टोकोफेरॉल, butylated hydroxy anisole, butylated hydroxytoluene, BHA and BHT, and 4-hydroxymethyl 2,4 tertiary butyl. They are the antioxidants used in the emulsion. You can see over here again HLB values. HLB वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार आपने इसमें भी देखा है इमल्शन, सॉरी सरफेस टेंशन इंटरफेशियल फिनोमेना, और इसमें और एक बार देखेंगे. ठीक है. सो हाई, ओके. So HLB value is nothing but the arbitrary scale on which different surfactants they have given the number by Griffith in 19. So less will be the HLB value, more will be the lipophilic. अगर कोई surfactant का HLB value कम है तो उसको लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, कोई surfactant का HLB value बहुत ज़्यादा है तो उसका हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है. So hydrophilic surfactant will have more HLB values. Lipophilic surfactant will have less HLB value. इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है. व्हाट इज द एचएलबी स्केल फॉर एंटी फॉर्मिंग एजेंट 1 to OW emulsifier 3 to 8, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, है ना, 7 to 9, OW emulsifier अगर 8 to 16. तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी OW emulsifier. वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट भी आता है उसमें. डिटर्जेंट्स will have 13 to 16, है ना, सोल्यूलाइजर्स will have 16 to 20, largest, and this Griffin has given HLB scale ranging from 1 to 20, but there are HLB values more than 20 also. जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट का होता है 40. इसके ऊपर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका. आप जो शैम्पू यूज करते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, इज अ फॉर्मिंग एजेंट. एंटी फॉर्मिंग एजेंट का होता है 1 to 3, OW emulsifier का 2 to 6, वेटिंग एजेंट 7 to 9, OW emulsifier 8 to 18, सोल्यूलाइजर 15 to 20, डिटर्जेंट्स 13 to 16. इक्विपमेंट यूज फॉर इमल्शन फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट द स्मॉल स्केल के ऊपर आप मोटर पेस्टल यूज करते हो, है ना. मोटर पेस्टल में क्या करते हो, ऑयल लेते हो, ऑयल लेते हो पर्टिकुलर, उसमें गम डालते हो और उसमें मोटर में उसको प्रॉपर्ली मिक्स करते हो. तब तक आप मिक्स करते हो, तब तक मोटरिंग पेस्टल से मिक्स करते हो जब तक आपको चिक चिक का आवाज सुनाई नहीं देता. सो यू हैव टू टेक ऑयल, यू हैव टू take a amount, take amount of oil, and you have to add required amount of your gum, and you have to triturate until cracking sound appears, and then you have to add slowly the water in that. Then only you are going to get emulsion on a laboratory scale. But on a large scale, you have different mechanical stirrers, homogenizers, ultrasonifiers, colloidal mill. So they are used to produce the emulsion on large scale. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है. पार्ट्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, गम फॉर प्रिपरेशन ऑफ emulsion. कितना पार्ट का ऑयल लेना है आपको, कितने पार्ट गम लेना है, कितना पार्ट वाटर लेना है. That depends on the type of oil. So for oil gum ratio, this is oil gum ratio. ये they used to ask question on this oil gum ratio. कि अगर fixed oil है, if it is a vegetable oil, fixed oil like almond oil, arachis oil, castor oil or okay, cod liver oil. से आलमंड ऑयल, है ना, बादाम तेल, अरेचिस ऑयल, है ना, शेंगदाना तेल, कैस्टर ऑयल और कोटियोल ऑयल अगर है तो ऑयल लेना है आपको 4 पार्ट ऑफ ऑयल, 2 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ गम. मींस व्हाट, 4:2, 2:2. So ratio will be 4:2:1. Oil water gum ratio. If you take mineral oil, अगर आपको पैराफिन ऑयल है, so you have to take this ratio 3:2:1. The 3 part of oil, 2 part of your water and 1 part of volatile oil है. अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए, ये सॉरी मिनरल ऑयल के ऊपर आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया. सो व्हाट इज द गम वाटर ऑयल रेशियो फॉर पैराफिन ऑयल इमल्शन? 3:2:1. volatile ऑयल अगर है, टर्पेंटाइन ऑयल, सिनेमन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल है या फिर तुलसी ऑयल, कोई भी volatile ऑयल है, सो व्हाट इज द रेशियो? 2:2:1. ओलियो रेजिन अगर है तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेल पर एक्स्ट्रा 1:2:1. तो ये याद कैसे रखना है, बहुत इजी है. इतना इजी है कि इससे
इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं. हाउ टू रिमेंबर दिस रेशो? बस याद रखना है, फिक्स्ड ऑयल अगर है, वेजिटेबल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, मिनरल ऑयल है, 3 लिखो. टर्पेंट है, ओके, वोलेटाइल ऑयल है, 2 लिखो, है ना. ओलियोरिजिन है तो 1. तो 4 से लेके एक तक लिख लो, 4 3 2 1. पहला क्या है कि अगर फिक्स्ड ऑयल है, दूसरा क्या है मिनरल ऑयल है, तीसरा क्या है वोलेटाइल ऑयल है, चौथा क्या है ओलियोरिजिन है. अभी देखो फिक्स्ड ऑयल में सबसे ज्यादा ऑयल होता है पैराफिन ऑयल में, उसके बाद पैराफिन ऑयल मतलब मिनरल ऑयल, उसके बाद में वोलेटाइल ऑयल, उसके बाद में ओलियोरेजिन. बाकी ये तो फिक्स है ना, 2 and 1. बस आपको इतना याद रखना है, 4 3 2 1, वो भी serially. Okay? So likewise this, if fixed oil is there, so what is the ratio? 4:2:1. If fixed oil is there, what is the ratio? You have to take 4 part of oil, 2 part of water, 1 part of gum. If mineral oil is there, you have to take 3 part of oil, 2 part of water and 1 part of gum. If volatile oil is there, you have to take 2 part of oil, 2 part of water and 1 part of gum. It is oleoresin, 1 part of oleoresin, 2 part of water, 1 part of emulsion. Shelf life directly depend on the conductive stability, thermodynamic stability and its temperature. Now method of preparation of emulsion. So conventional method और dry gum method. पहला मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड और ड्राई गम मेथड. इसमें क्या है, ऑयल वाटर गम का रेशियो दिया होता है 4:2:1, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड ऑयल है तो 4:2:1. ऑयल वाटर गम, ऑयल एंड गम दे आर ट्राइचुरेटेड इन द वाटर एंड पेस्टल. ऑयल लेना है आपको, उसके बाद में गम ऐड करना है. यू हैव टू ट्राइचुरेट इन द वाटर एंड पेस्टल अंटिल क्रैकिंग साउंड अपीयर्स. चिक चिक का साउंड आता है, वो साउंड आने तक करना है. बाद में यू हैव टू ऐड वाटर स्लोली विद द कंटिन्यूअस स्टरिंग इन ओनली वन डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इमल्शन क्रैक होगा. देन दूसरा एक मेथड होता है इंग्लिश मेथड और वेट गम मेथड. ड्राई गम मेथड को बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड, इंग्लिश मेथड को बोलते हैं ड्राई गम, इंग्लिश मेथड को बोलते हैं वेट गम मेथड. सो यू हैव टू यूज म्यूसिलेज ऑफ गम विद द वाटर व्हिच इज प्रिपेयर्ड, देन फिक्स्ड ऑयल इज एडेड एंड मिक्स्ड इवनली. पहले तो क्या है गम और वाटर का सॉल्यूशन बनाओ, बाद में उसमें ऑयल ऐड करो, ऐसे. थर्ड होता है बॉटल मेथड, इसको बोलते हैं फोर्ब्स मेथड. बॉटल मेथड और फोर्ब्स मेथड. मेथड यूज्ड फॉर एक्सटेम्पोरानस प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन फ्रॉम वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम फॉर ओलियोजेनस सब्सटेंस लाइक हेमोग्लोबिन. तो जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसके लिए बॉटल मेथड और फोर्ब्स मेथड है. पाउडर्ड acacia is placed in the bottle, 2 part of oil is added, bottle is shaken thoroughly and equal volume of water that oil is added, so and shaken, not suitable for viscous liquid. Then last the auxiliary method. Emulsion prepared by one of the above method is passing through a homogenizer for getting a globule size 5 micron or less. जो भी इमल्शन बना है बाय यूजिंग दिस मेथड्स आपको वो पास करना है होमोजेनाइजर से. सो टू गेट अ फाइन इमल्शन नोन एज ऑक्सिलरी मेथड. देन होता है इन सितु सोप मेथड. इन सितु सोप मेथड, कैल्शियम सोप्स आर यूज्ड एज अ इन सितु इमल्सिफायर. माइक्रो इमल्शन क्या होता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर और बाइफेजिक ओडब्ल्यू सिस्टम स्टेबलाइज्ड विद सर्फेक्टेंट. साइज रेंज होता है माइक्रो इमल्शन का 1000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 माइक्रोन टू 100 एंगस्ट्रॉम, 1000 टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है. सो इट इज 10 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन. माइक्रो इमल्शन का साइज भी एक बार पूछा है. नेक्स्ट विल सी इंस्टेबिलिटी इन द इमल्शन. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सिम्टम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी. जो इमल्शन है, इन द इमल्शन यू हैव वाटर एंड ऑयल. Oil droplet are dispersed in the water. Instability will result in the flocculation. The flocculation means aggregation of these globules to each other. Floccules बनेंगे. So it is a reversible one. Flocculation is a reversible stability. Flocculation is a reversible instability. Now flocculation may be either of two types. Upward creaming. जब oil globules will have density less than the water. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है recently. When oil globules have density less than water, so creaming is known as upward creaming. When oil globules are dispersed phases more density than water, so creaming will be downward. Okay. Then coalescence means formation of aggregation of droplets
to form a large size droplet known as a coalescence, and it is a irreversible instability. Coalescence result in the breaking of emulsion. Breaking मतलब क्या? Oil phase separate होगा, water phase separate होगा. Then phase inversion. Phase inversion. Change in the type of emulsion. OW emulsion था W by emulsion होगा. ना O by W था ये oil in water बन गया water in oil. याद रखना है only flocculation and creaming. Flocculation and creaming they are known as a reversible type of instability. Flocculation and creaming they are reversible, and this phase inversion and coalescence they are irreversible. We are going to see two. So instability in the emulsion. So coalescence होता है. Coalescence, which is an irreversible type of instability, that is nothing but the aggregation of globules on the surface of emulsion because of the temperature or viscosity change, and it is a starting stage of incompatibility. कोएलेशन मतलब क्या है? ग्लोबुल्स एक में के साथ में अट्रैक्ट होंगे, एग्रीगेट होंगे और वो बनाएंगे आपका क्रैकिंग. सो that is because of the temperature change, viscosity change, or it is a starting point of instability. Then flocculation. Flocculation is a reversible one. ना क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. So formation of floccules due to increasing the ionic strength of electrolyte under used for emulsification. High internal phase volume that is tight packing. High internal phase volume that is tight packing of dispersed phase can cause flocculation. ना अगर internal phase ज़्यादा है, amount of oil ज़्यादा है water में, तो flocculation हो जाएगा. Cracking is irreversible. Coalescence of dispersed globule and separation of dispersed phase. Redispersion can be achieved. So redispersion cannot be achieved. The coalescence of dispersed globule, separation of dispersed phase as a separate layer, and redispersion cannot be achieved. But in case of flocculation, redispersion can be achieved. Flocculation में फिर से आप redispersion कर सकते हैं ना. Cracking क्यों होता है? What is the what are the reason for cracking? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Cracking may be because of the addition of emulsifying agent of opposite type. जैसे आपने anionic surfactant यूज करके emulsion बनाया और उसमें आपने cationic surfactant डाल दिया, there will be cracking of emulsion. Decomposition of emulsion. Decomposition of emulsifying agent. जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, उसने आगे से खा लिया सब. और precipitation of emulsifying agent. Addition of common solvent. इसमें emulsifying agent भी soluble है, oil भी soluble है. That will cause cracking because of the microbial action. Incorporation of excess of dispersed phase particle. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है recently. When there will be phase inversion, if the phase volume ratio, the concentration of dispersed phase to the concentration of continuous phase, if it exceeds 74%, अगर internal phase 74% से ज़्यादा होगा, that will cause cracking of emulsion. These three are the instability. और एक है creaming. Creaming is a reversible formation of layer relative to relative concentrated emulsion. Formation of layer of relative concentrated emulsion. ना flocculation होता है, उसके बाद में creaming होता है. It can be reversible just by shaking. Globules can be redispersed. Cream will be at the top or bottom depending upon the density of oil. Creaming can be minimized by reducing the mean size and size distribution of globules, by increasing the viscosity of continuous phase, or by storing the emulsion at a cool place. Reversible. Creaming can be reduced by. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, कैसे creaming कम कर सकते हैं. और phase inversion recently आया था क्वेश्चन. Phase inversion means change in the type of emulsion. Reversal of emulsion type is known as a phase inversion. Change in a OW emulsion into WO emulsion and vice versa. और reason क्या है? Okay. If you add enough calcium chloride to the OW emulsion, which is stabilized by sodium soap. देखो सोडियम सोप क्या है? एनायनिक सरफेक्टेंट. कैल्शियम क्लोराइड क्या है? कैटानिक है. सो क्या होता है? इन्वर्जन में होकर. ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है. मोस्ट स्टेबल रेंज फॉर डिस्पर्स्ड फेज कंसंट्रेशन इज नथिंग बट 30 to 60%. अगर इमल्शन में 30 to 60% इंटरनल फेज है, so if dispersed phase is 30 to 60%, then most of time this emulsion will be stable.
स्टेबल रेंज क्या है 30 to 60%. इंटरनल फेज अगर 30 to 60% है, if more amount of dispersed phase is present in the, there are chances of phase inversion. There are chances of phase inversion. Are you getting or not?